प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 को डिस्कस करने से पहले आपको साइबरनेटिक्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट हाउ इट इज़ डिफाइंड in terms of biotechnology, in terms of simply biology, even in medicine or in terms of psychology, and even in mathematics we can define cybernetics as well. इसके अलावा आपको cybernetics की applications का भी पता होना चाहिए. So let's talk about the question of problem number 21. What ethical issues are raised by cybernetics? So today we will talk about the ethical issues which are raised by the technique introduced in 21st century, that is cybernetics. Now in this session we will divide ethical issues related to cybernetics in 3 areas and we will discuss those areas one by one. सिर्फ आप लोगों को रिमाइंड कराने के लिए कि what is cybernetics actually, then in simple words, cybernetics is a study of interactions between man, machine, as well as between the experimental animals. Now, the first area of ethical issue that is of concern regarding cybernetics is that technology is for few people who can afford it. Cybernetics is somewhat a very expensive technology and only wealthy ones can make use of this technology and they can communicate with one another by the use of senses or impulses, and they can only afford cybernetics. So there is power of wealthy over less wealthy. In other words, we can say that there is power of rich people over poor people. Now, according to first area of ethical issues related to cybernetics, only selected groups of people can enhance their abilities making use of senses or impulses to interact with the world. So, अगर कोई भी scientific advances होती है तो वो पूरी community के लिए, पूरी population के लिए होती है, not only for the wealthy ones. Then why cybernetics is only for rich people? Only rich people can communicate with one another in a dramatic way. What about the poor people? How they can get the advantage from cybernetics? Now the second area which is of concern regarding the ethical issues of cybernetics is that machines are in charge of key human functions. Human beings जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, क्या मशीन उसकी बॉडी के फंक्शंस का चार्ज ले सकती है? मशीन तो एक मशीन की तरह काम करेगी, वो कभी ख़राब भी हो सकेगी, सेंसेस और इम्पल्सेस का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है. तो हाउ मशीन्स कैन टेक इन चार्ज ऑफ ह्यूमन फंक्शंस? देन डिफरेंट इम्प्लांट्स आर यूज्ड थ्रू साइबरनेटिक टेक्निक टू ट्रांसफर थॉट्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स. इसके अलावा बहुत सारे इम्प्लांट्स हैं जो कि हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइबरनेटिक्स, जैसे कि हार्ट पेसमेकर्स, आर्टिफिशियल रेटिनास. बट व्हाट अबाउट दीज इम्प्लांट्स, whether they are safe to use or not? Then we can make use of cybernetics for setting up network for enhanced human beings. They can communicate with each other in a special way. So here we are talking about the superhumans whose impulses, senses are controlled by the computer software. So number of ethical issues are raised by the superhumans which are developed by a technique cybernetics. Again, here we will talk about the implants, that whether they are safe to use in superhumans, then the potential use of superhumans are there and it is clear. So people with enhanced capability will exert power over the other. Cybernetics के ज़रिए अगर people में enhanced capabilities डाल दी जाए तो क्या वो एक रोप नहीं जमाएगा दूसरे लोगों के सामने? For example, no doubt deaf and dumb people can communicate with each other through cybernetics technique.
लेकिन अगर ये साइबरनेटिक्स टेक्निक का गलत इस्तेमाल होने लगे और कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने लगे, तो क्या ये लोग दूसरे लोगों के ऊपर अपना रोप नहीं जमाएंगे? सो देयर मस्ट बी अ कंपटीशन बिटवीन द पीपल विद इन्हांस्ड कैपेबिलिटीज़ over an other. The third area of concern regarding the ethical issue of cybernetics is that if person-to-person thoughts are transferred via implanted microcomputers, does become a reality? क्या superhumans कभी reality बनेंगे या नहीं? और उनकी thoughts को कौन control करेगा? अगर ये machines ही control करेंगी, then it is unacceptable. So even a few people who have participated willingly in the technology, there are chances कि implants अगर किसी human being में डाले गए हैं according to their own consent, तो implants या कोई भी टेक्निक साइबरनेटिक्स की यूज़ की गई है तो machines will act as a machine. वो सेंसेस और इम्पल्सेस को हार्मफुल वे की तरह ट्रांसमिट कर सकती है. इसके अलावा जब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो हम पेटेंट जीन प्रोडक्ट की भी बात करते हैं जिसके ज़रिए उसे हम कमर्शलाइज कर सकते हैं एंड वी कैन ऑब्टेन द बेनिफिट्स फ्रॉम इट. लेकिन जब हम साइबरनेटिक्स की बात करते हैं, सेंसेस एंड इम्पल्सेस आर कंट्रोल्ड बाय द माइक्रोचिप्स और बाय द कंप्यूटर, सो मशीन इज कंट्रोलिंग. How the senses can be patented, how the nerve impulses can be patented. So again, ethical issue is there. So who is regulating the implants generated by the techniques of cybernetics? Who is regulating the nerve impulses or who is regulating the senses? Still, there is no answer by the scientists. Society needs to focus on regulatory frameworks regarding the ethical issues raised by cybernetics. And Pink Floyd, who was a rock singer and he sang a song in 90s, another break come to mind. We don't need no thought control.